हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टोरी बीनीथ, जहां हम जानते हैं द स्टोरीज ऑफ सम रियली इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स। We have with us the स्पाई स्टोरी जिन्होंने पूरी इंडिया की गलियों का स्वाद हमारे लिए पॉटर्स में लाके रख दिया. Hats off to you. So we'll be inviting the founder and CEO of Spy Story, Mr. Soumyadeep Mukherjee, the man behind giving chutneys a different perspective. So first of all, congratulations, sir, on a successful pitch on Shark Tank and also getting an offer from Namita, getting a deal from the Shark Namita. Yeah, thank you so much. तो सर आपको चटनीज बनाने का आइडिया आया कहाँ से? यार, I don't know. I mean, actually, the Eureka moment थोड़ा क्लीशे हो जाता है. But my kids wouldn't eat achar at all, right? And we are from Indore. हमारे यहाँ लाइफ में ना मतलब कोविड में अगर रेमडेसिविर एक दवाई थी तो फिर अचार दूसरी दवाई होती थी, राइट? तो हमारे मतलब अचार इज वेरी क्रिटिकल. And it just happened. I thought, I don't know, everything they would take mayo, different flavors of mayo. You know, I realized sauces were in thing with these kids, right? So मैंने एक दिन ऐसे ही try किया, blended an achar into a sauce and made a wrap out of it. They liked it. उनको flavor तो पसंद था. So then I researched a little more. I also found out that almost every kirana store in Bombay was selling some kind of a chutney. You know, in a normal homemade जो pack होता है, उसपे sticker लगा के. Yeah. There were people who were selling bhelpuri chutneys or samosa chutneys. Pani puri chutney was most common. I also picked one pack, got it home, and surprisingly, my wife was aware of it. She said, "Oh, great, चल बढ़िया pani puri बनाएंगे." I suddenly realized that there was actually nobody in the country driving this category as a brand. Yeah. Completely unorganized as a category, right? I mean, हम बड़े हुए हैं. For us, आज हम कुछ भी मंगाते हैं, लेकिन हमारे लिए पापड़ तो लिज्जत ही है, right? या इंडिया का पानी is Bisleri. For us, we started cooking Chinese at home because of Ching's, right? Yeah, yes. National brand, for example, or pickle के लिए mother's recipe है. There was no national achar. There was no national brand for chutneys. And I saw there's a white space, and hence the idea that why not try this? We tried this on 3 SKUs first, 3 variants, and the response was very good. You know, initially before we got into commercial sales, we would actually go to housing societies in Bombay, participate in their local fest, sell from there, just to get a feedback on the pricing, on the product and all. And when we realized that nahin, ye to, matlab, there is a convenience idea of launching chutneys in a packaged form. The motivation was obviously organizing an unorganized sector, and also the motivation that we are not creating a category. It's a category which we have all grown up with. Yeah. Yes. So मतलब कोई कैटेगरी क्रिएट नहीं कर रहे. हम नहीं कह रहे हैं, हम लोग यही खा के बड़े हुए हैं. हमारे हर घर में हिंदुस्तान में चटनी या अचार का एक वर्जन जरूर होता है. Yes, Each culture in India has its own version of pickle and chutneys. I mean, surprisingly, I'll tell you, Andhra, Telangana, erstwhile Andhra Pradesh, itself has more than 150 variants of chutneys. oh, We have our hands full. We have enough options of creating variants for people. हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है. yeah. We don't need to go to a Thai cuisine or an Italian cuisine. हिंदुस्तानी cuisine में बहुत ऑप्शन अवेलेबल है अभी भी. तो सर जैसे आप बता रहे हैं कि आपको बचपन से ही फूड बहुत अच्छा लगता था, आप बचपन हाँ, से ही मतलब मुझे foodie देख के भी थे। लगता है कि मैं सिर्फ खाने के लिए जिंदा हूँ. तो सर बचपन में भी आपकी जैसे मदर चटनीज बनाती थी तो आपको वो भी पसंद आती थी? बहुत हमारे घरों में बहुत कॉमन था. माय मदर वाज अ फिनोमिनल कुक. शी would make apple jams at home. She would make guava jellies at home. तो And वहीं पे because चटनी के लिए हमने बहुत ट्रैवल किया है, तो मेरे घरों में अलग अलग तरह के अचार बहुत मेरी, because we are Bengalis, तो Bengali versions of अचार. Then we were in Odisha, वहाँ के अचार. And then finally I grew up in a place called Indore. So Indore though is known for vegetarian food, but if you're a vegetarian, in Indore is the paradise for you, right? So my mom was a phenomenal cook. हमारे घरों में तो अचार और चटनियों की भरमार. इनफैक्ट बंगालीज में चटनीज की वैरायटीज रेंज फ्रॉम एज सिंपल एज आम की चटनी से लेकर फिश की चटनी होती है, ड्यूरिंग समर्स. तो या
Actually, how did you get to know about Shark Tank? Shark Tank US is an outstanding franchise. People, I Agree. don't know of any entrepreneur in India जो Shark Tank US को follow नहीं करता होगा. Hmm. So when Shark Tank season 1 came in, we were very excited, right, to see what was happening. And then obviously their registrations open, you apply, and you get shortlisted. You go for an audition. Then you get shortlisted out of the audition, and then finally you go to the tank. आपने Yeah, एक्सपेक्ट किया था कि आपको कभी चांस मिलेगा इतने बड़े शार्क्स के आगे अपने ब्रांड को बताने का, उनके आगे पिच करने का? बिल्कुल नहीं. मतलब in fact I tell my kids that whatever we are doing now as a brand, ये हमने कभी सोचा ही नहीं था. So see, I'm a first generation entrepreneur. मेरी जिंदगी में, मेरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया है. Right? We were all typical middle class नौकरी वाले लोग हैं. And you know, हिंदुस्तान के मिडिल क्लास कैसी होती है, तनख्वाह बढ़ने से पहले खर्चे बढ़ा लेते हैं, राइट? कि सैलरी बढ़ने वाली है तो ये प्लान कर लेते हैं कि यार ये वाली ईएमआई ले लेते हैं. तो हम भी वैसे ही थे. But yes, I took the plunge. I thought of building something on my own, and here we are. I think it's a dream run, and ये भी learning है that entrepreneurship is a very humbling experience. So there is nothing small or large. Everything takes time. Rome was not built in a day. Yeah. We will also take our own time to reach to that summit, right? It's a lovely journey. और जहाँ हम हैं, जो हम कर रहे हैं, ये तो हमने कभी प्लान ही नहीं किया था ना. हमारा तो प्लान करियर की शुरुआत में था कि भाई 30 साल नौकरी करेंगे, 2 घर बनाएंगे, बच्चों की शादियां करेंगे, रिटायर हो जाएंगे. ब्रांड बिल्डिंग तो उसका पार्ट नहीं था अपने लिए. So yeah, this is a good run. How did Shark Namita help you? So that it is still on papers. So as of now, we are still in midst of the due diligence, but we can only give our wish list. I think what we have heard from our fellow participants is that Namita and our team are extremely helpful in getting you the right connects, opening doors for you. Yeah, ultimately तो हमें काम करना है. She can't work for us, right? Yeah. She's ultimately running Endure, right? But True. what she can do is definitely help us, by opening doors for us, giving us directions. For example, हमारी जो category as a brand, exports is a big market for us. And with MCure's exposure in more than 70 countries, I'm sure she will be able to open doors for us in at least the top 5-10 countries relevant. हाँ, ठीक है, हमारा 100% हमारा category अलग है, उनकी medicine category अलग है, but connects to connects हैं. I'm sure they will have enough. That's our wish list, that she would be able to help us. But whatever we have heard about her, they are very, very strong. They back their founders big time. So सर, आप शुरू से ही कॉन्फिडेंट थे कि मेरे प्रोडक्ट अच्छे ही बनने वाले हैं, या शार्क से तारीफ सुनी कि ये प्रोडक्ट उनको बहुत पसंद आया, या प्रोडक्ट इज योर नहीं, हीरो? शार्क से पहले तो मेरे घर में 3 शार्क है ना, मेरे बच्चे और मेरी वाइफ. So before it goes to the shark, let me tell you one, that our product has been appreciated by everyone that has tasted our product over the last 3 years. And the fact that we have kept growing in the same cities in the last 3 years is only because of the product quality. And I think we are fortunate that ये भी एक blessing है that today as a founding team, all three of us, me, Vibhor and Gayatri, we come from very specific domain knowledges, and that helps us build the brand accordingly, because Vibhor is a pure food techie. He's a chef. He helps us build the right products. Gayatri is a marketing person and I'm a distribution person. So all three of us bring our own core expertise. So product तो core है हमारा यार. मतलब we are super confident that हमारा product को तो कोई नहीं match कर सकता. So आपने सारे शार्क्स को अपने प्रोडक्ट टेस्ट करवाए थे, they loved it. तो सबसे ज्यादा शार्क फूड ली कौन सा है, एंड किसने सबसे ज्यादा बॉटल्स ली? That I can't tell किसने सबसे bottles ली, but yeah, everybody loved the products. सबके अपने specific choices भी थी, of course. Favorites थे, yeah. So Namita loved the Kolhapuri chutney, right? On the river. Aman loved the lemon chutney. Piyush also loved the lemon chutney. Yeah. Anupam loved our Punjabi chili lime. Namita loved the mustard.
Yeah. Coconut, everybody was in love with coconut. So that's the world's first coconut in a bottle. Yeah, it was Yeah. still so fresh. Yeah. So sir, after getting praised on Shark Tank, तो कस्टमर रिस्पॉन्स कैसा रहा शार्क टैंक के बहुत बाद? अच्छा और बिजनेस में ग्रोथ ऑब्वियसली आई होगी, तो कितना फोल्ड्स बिजनेस था। ग्रो? I can say that in the last 10 days on our website, we have done almost 10 months equivalent of sales in the last 10 days. In fact, we are still servicing orders. Congratulations on that. So, like in today's world, that everyone is just promoting and moving towards Western food and culture, you have taken a step to serve India and आपने पूरे इंडिया के टेस्ट को यूनाइट करके पॉटर्स में सर्व कर दिया, तो हमारा that is मिशन है just to take India to the commendable. world all over again. That is commendable, like literally. हमें लगता है देसी, हम देसी हैं भाई हार्ट। हम कितना भी बाहर पास्ता और पिज्जा खा लें, घर आके हमको एक दाल चावल तो चाहिए। True. नो, यू आस्क अ रैंडम इंडियन Soul food सोल है. फूड क्या बोलेगा, कोई खिचड़ी बोल देगा, कोई दाल चावल बोलेगा। सोल फूड कोई ट्रिपल शेजवान तो नहीं बोलेगा। Yeah. ऑब्वियसली सर, इंडिया में तो नहीं। सर So इंडिया के खाने में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, कि इंडिया में ऐसा क्या कल्चर है या वैरायटी क्या पसंद है आपको सबसे ज्यादा? I think Indian food का variety is crazy, right? For example, I can have South Indian breakfast all my life and I can never get bored. मैं रोज खा सकता हूँ, मतलब मुझे कोई रोज डोसा खिला दे, रोज इडली खिला दे नाश्ते में, मैं रोज खा सकता हूँ Same. और मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा, राइट? खिचड़ी इज माय ऑल टाइम फेवरेट सोल फूड। मतलब अगर लाइव हमारे घरों में भी है, मतलब अगर 4 लोग हैं और हर घर में एक सवाल है ना कि सुबह टिफिन में क्या जाएगा और रात को डिनर में क्या बनेगा। एवरी हाउस होल्ड हैज अ कॉमन क्वेश्चन। यस। हमारी वाइफ भी पूछती है, 3 लोग, भैया आज क्या खाओगे? तो जब कुछ समझ नहीं आता बोले खिचड़ी बना दो, यू नो। सो आई थिंक सोल फूड इज खिचड़ी। आई लव खिचड़ी। आई मीन आई लव माय वैरायटी एंड आई एम ओपन टू ऑल काइंड ऑफ खिचड़ी। खिचड़ी है मतलब आई लव इट। सर व्हिच इज योर फेवरेट चटनी इन ऑल योर चटनीज? यू इन मस्ट ऑल हैव माय ट्राइड चटनीज ऑल। या। Of late, I'm a little biased. I love my momo chutney. I think it's the best in the country. You guys must try it. And या सर श्योर। and otherwise, I love hot sauces. So Kolhapuri jhatka, it goes in everything I have. So, what is your vision for the company, like in next 5 or 10 years? So in the immediate vision as an organization, we want to build to scale and sustain, right? Hmm. So there are obviously founders who build to sell. Mm-hmm. We are very clear, all three of us, that we are building to scale and sustain. We want to make a food FMCG company. हमें दिखता है कि we can be 1,000 crore brand in the next 5 years. सर लाइक हमने नोटिस किया कि आपकी सारी चटनीज के नाम है कोल्हापुरी समथिंग, नागपुरी समथिंग, तो इंदौर ये वाली चटनी. इनोवेटिव नाम कौन सोचता है इतना? Actually, innovative नाम बाद में आया, इससे भी innovative नाम होते थे पहले। तो our mint chutney used to be called the amazing spicy mint sauce, you know. Oh. But then हमने realize किया, हमारे पास एक कस्टमर का फोन आया एक दिन, हम तीनों ऑफिस में थे, मैं, गायत्री और विभोर, एक कस्टमर, एंड लकीली मेरी आदत है कस्टमर सर्विस नंबर मेरे पास होती है, राइट? सो डांट भी पड़ती है तो मुझे पड़ती है, तारीफ भी कोई फोन करता है तो मुझे ही मिलती है। सो एक दिन फोन आया किसी कस्टमर का और बोला कि आई बॉट योर स्पाइसी मैंगो चटनी एंड आई डिडंट लाइक इट। मैंने सर क्या हो गया? मतलब नॉर्मली थोड़ा अजीब ही लगता है ना कि बहुत ही खराब प्रोडक्ट है आपका। तो आई कॉल्ड देम अप, तो उन्होंने मुझे, मैंने विभोर से बात कराई तो उन्होंने बोला यार ये तो थोड़ी तीखी है, स्पाइसी, इट शुड बी स्वीट। तो उन्होंने बोला सर ये तो बड़ा सिमिलर है, जैसा बनारस में मिलता है वैसा है। उन्होंने बोला ओ अच्छा, दिस इज फ्रॉम यूपी। अच्छा, आई थॉट बिकॉज आई एम फ्रॉम मैंगलोर, आई थॉट दिस इज लाइक आवर्स। That's when we realized that every culture had its own version of the chutney. So it is very important for us to spell out the name of that place. And that's how we renamed our entire category. It's called Indori Lemon. It is because lemon chutney तो हर वर्जन में अलग होगी। तो जो उठा रहा है उसको पता है कि बस ये इंदौर की लेमन चटनी है, ये वैसी है, right? It's a Kolkata mango mustard adventure. Why we say? Because normally a mustard sauce with a vinegar, we remove vinegar and added mustard. Calcutta में, Bengal में, aam kashundi is a very common side of the food, right? Of the dish. And normally नॉन बंगालीज या नॉन ईस्ट साइड के लोग, जो उड़िया से बंगाली तो बिहारी के अलावा मस्टर्ड का जो पंजेंसी है ना, बहुत लोग झेल नहीं पाते। तो हमने एक वर्जन बनाया विद रॉ मैंगो एंड वो कासुंदी को हमने सॉस पे कन्वर्ट किया, राइट? इट्स एन आउटस्टैंडिंग स्प्रेड।
and that's how it's called Kolkata. So people know कि बस ये Calcutta की है. Momo chutney, Indian Chinese was born in Tangada, Tate Bazaar in Calcutta. So it is called Tangada Momo chutney, right? From the birthplace of Indian Chinese. सर That's आपकी how the पैकेजिंग names of the cities, names of the places. पैकेजिंग भी काफी अच्छी थी आपकी, आपने खुद डिजाइन करी अपने पैकेट्स, काफी अच्छे, मतलब नहीं, कलरफुल it भी। has been designed by a gentleman called Abhijit Malik, very senior creative person. और हम यार we are a startup, हम तो गरीब लोग हैं, हम तो 50-60 लाख रुपए नहीं दे सकते पैकेजिंग के लिए. But the idea was that when you pick up a bottle, उसको शहर की झलकियां उस बॉटल में होनी चाहिए. हाँ, it's very colorful. तो आज अब अगर आप कोई हमारी बॉटल उठाते हैं तो आपको शहर की झलकी दिखेगी. आपको इंदौर का उठाएंगे तो आपको छप्पन दिखेगा, मध्य प्रदेश का शेर दिखेगा, राजवाड़ा दिखेगा. यू विल रियलाइज कि हाँ अरे यार मैं इंदौर. आइडिया इज टू ट्रांसपोर्ट यू टू द सिटी व्हेन यू हैव दैट बॉटल इन योर हैंड, राइट. एंड सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है. अगर कोई यंगस्टर है, जैसे मेरे बच्चे, उनके लिए तो नॉस्टैल्जिया कुछ नहीं है, राइट, बट दे रिलेट टू अ सिटी. So that icon of the city tells them about that, the product takes them to that place. So it was a very insightful session, and it was really an honor. We love talking to you. तो लिटरली मजा आ गया बात करके. Yes. No, it's pleasure is all mine. You guys are Thank you outstanding. so much for taking out time and giving us your precious time. Please. And we'll definitely try out more such sessions with you. जितनी हो सकेगा सारी chutneys. Please try the chutney, spread the word, and don't forget to try the momo Especially chutney. the It's momo really one. very good. Because Yeah, it's sure. your favorite. Sure. ठीक है. Bye. Take care. Good night. Thank you, Thank you, sir. sir. The Spice story, great success. in the Success, future. yes. Thank you so Building much. a big We need all And the hope you blessings. reach that summit as soon as possible. Unicorn We need company, all the yeah. blessings. Thank you so much, sir. Bye. Bye, Take care. sir. Bye, sir. Thank you.